everyone, welcome to all in the series of real analysis. So आज हम कुछ थ्योरम्स करेंगे, ठीक है, कुछ कॉन्टिन्यूटी की एंड कुछ थ्योरम्स करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड। थ्योरम लिखिए। A function from x to y is continuous at a if and only if f inverse v is open in x for every v that is open in y. So if v is an open set in y, then f inverse v is open. हर एक ओपन सेट v के लिए जो कि y का सबसेट होगा उसके लिए जो f इनवर्स v है वो ओपन होगी, तभी हम कहेंगे कि f जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। And conversely, if f is a continuous function from x to y, so कोई भी open set होगा v subset of y, f inverse v is open. So suppose that the inverse image under f of every open set is open. Then we have to show that f is continuous, ठीक है। f is a function from x to y. हमें क्या शो करना है, f कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists delta greater than 0 such that fx minus fx naught is smaller than epsilon whenever x minus x naught is smaller than delta, ठीक है। So अब देखिए प्रूव करते हैं हम। Let x naught belongs to x, then fx naught is image of x naught under f, ठीक है, is image of x naught under f. Now let B be an open set which contains fx naught, ठीक है, and fx naught belongs to B. हम देखिए B एक ओपन सेट है, so neighborhood of x naught is subset of B, that means fx naught, neighborhood of fx naught is subset of B. And हमें क्या given है, for every open set in B f inverse V is open, ठीक है। So now f inverse B is open in x. This implies that x naught belongs to there exists delta such that x naught belongs to x naught minus delta, x naught plus delta is subset of f inverse v, ठीक है। और यही तो चाहिए था हमें कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट डेल्टा
such that fx minus fx naught is smaller than epsilon whenever x minus x naught is smaller than delta. ठीक है, सो वन साइड प्रूफ हो गई. अब इसका कन्वर्स प्रूफ करते हैं. Now, conversely, let x naught belongs to f inverse v. ठीक है, then fx naught belongs to v and v is an open set. ठीक है, now since v is open, then there exists r greater than 0 such that fx naught minus r fx naught plus r is subset of v. Now choose epsilon greater than 0 and smaller than r. ठीक है, and since f is continuous, there exists delta greater than 0 such that fx minus fx naught is smaller than epsilon whenever x minus x naught is smaller than delta. ठीक है, now if x belongs to x naught minus delta x naught plus delta, then fx should belong to fx minus epsilon and fx plus epsilon. ठीक है, fx naught. ठीक है, fx बिलोंग करेगा fx naught के नेबरहुड से and it is subset of v. Thus fx belongs to v. Moreover, x belongs to f inverse v. ठीक है, तो क्या हो गया, x naught minus delta x naught plus डेल्टा सबसेट हो जाएगा एफ इनवर्स वी का. हमें यही तो चाहिए था कि कोई भी एक ओपन सेट है v y का सबसेट है, उसके लिए जो एफ इनवर्स v होगा वो ओपन होगा, और ओपन होने के लिए हमें एक नेबरहुड ढूंढना पड़ेगा. जैसे x नोट है, x नोट का नेबरहुड जो है ये इसका सबसेट हो गया. ओपन सेट की यही तो डेफिनेशन होती है कि फॉर ऑल x belongs to x, if neighborhood of x is subset of x, then x is open. ठीक है, तो ये हो गया. Thus, then f inverse v is open and f inverse v is open. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए. Condition for the existence of extreme values. स्टेटमेंट लिखिए थ्योरम का. लेट f be a function defined on an interval I
and let f be derivable at an interior point C belongs to I if f has an extreme value at C. Then f dash C equals to 0. ठीक है, तो किसी पॉइंट पर अगर f के पास एक्सट्रीम वैल्यू है, दैट मीन्स या तो मिनिमम है या मैक्सिमम है वो उस पॉइंट पर, देन f डैश c इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, तो इसको प्रूव करते हैं. लेट अस अज्यूम दैट f has maximum at x equals to c. Then there exists delta greater than 0 such that fx is smaller than fc for all x minus c is smaller than delta, which implies that fx minus fc is smaller than 0 for all x such that x minus c is smaller than delta. ठीक है, अब दो केस बनेंगे. फर्स्ट केस तो ये कि x minus c is greater than 0 एंड सेकेंड केस x minus c is smaller than 0. ठीक है, तो फर्स्ट केस लेते हैं अभी. केस 1, x minus c is greater than 0. Then fx minus fc upon x minus c is smaller than 0. ठीक है, for all x minus c is smaller than delta, which implies that fx minus fc upon x minus c is smaller than 0 if x is greater than c, smaller than c plus delta. ठीक है, because x minus c is greater than 0, so x is greater than c. ठीक है, तो क्या लिखेंगे? thus x tends to c positive, fx minus fc upon x minus c is smaller than equal to 0. ठीक है, implies right hand derivative at c is smaller than equal to 0. ठीक है, सो केस 1 अगर हमने लिया x minus c greater than 0, सो हमारे पास जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन वो स्मॉलर देन इक्वल टू 0 आ गया. ठीक है, अब हम केस 2 लेंगे. So case 2, and x minus c is smaller than 0. Then fx minus fc upon x minus c is greater than 0. ठीक है, for all x such that modulus of x minus c is smaller than delta, which implies that fx minus fc upon x minus c is greater than 0 if x is greater than c
c minus delta and smaller than c, because case 2 क्या है, x minus c is smaller than 0, that means x is smaller than c. ठीक है, thus limit x tends to c negative fx minus fc upon x minus c is greater than equal to 0. ठीक है, this implies that left hand derivative is greater than equal to 0. Left hand derivative at c is greater than equal to 0. ठीक है, so केस 2 से हमें क्या मिल गया कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. बट हमें क्या गिवन है कि जो एफ डैश एक्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है एट पॉइंट सी पर. ठीक है, बट we also given that f dash c exists. So f dash c equals to r f dash c equals to l f dash c. अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इनको 0 होना पड़ेगा, इक्वल्स टू 0. ठीक है, सिमिलरली हम ये शो कर देंगे कि अगर f हैज मिनिमम एट पॉइंट c देन f डैश c इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये थ्योरम प्रूव हो गई. अब नेक्स्ट थ्योरम लिखते हैं. Sufficient condition for the existence of the extreme value. Sufficient condition for the existence of extreme values. So let f be derivable on an interval and let f dash c equals to 0, then first लिखिए if f dash x is greater than 0 for all x greater than c minus epsilon and smaller than c, and f dash x is smaller than 0 for all x greater than c and smaller than c plus epsilon, then f has a maximum at x equals to c. Second, if f dash x is smaller than 0 for all x greater than c minus epsilon and smaller than c, and f dash x is greater than 0 for all x greater than c and smaller than c plus epsilon, then f has a minimum at x equals to c. इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. नेक्स्ट लिखिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. Let f be derivable
on an interval and let f dash c equals to 0 if, first लिखिए f double dash c, double derivative of f at point c is greater than 0, then f has a minimum at x equals to c, and if f double dash c is smaller than 0, then f has a maximum at x equals to c. अब लिखिए मीन वैल्यू थ्योरम्स, कुछ थ्योरम के स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम्स, फर्स्ट है रॉलीज थ्योरम। So let f be a function defined on closed interval AB such that f is continuous on closed interval AB. Second, f is differentiable on open interval AB. Then third is that FA equals to FB. Then there exists a real number C between A and B such that f inverse C equals to 0. तो इसको प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ बाय एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, जो इससे पहले जो थ्योरम प्रूव कराई है उसके अकॉर्डिंग, बाय एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम f achieves its maximum on closed interval a to b, and also by applying extreme value theorem to f to minus f, then minus f achieve its maximum, so f achieve its minimum on closed interval a to b, and also f achieves its minimum on closed interval a to b. So if both minimum and maximum are achieved at boundary, then the maximum and minimum are the same. And thus the function is constant. And a constant function has zero derivative everywhere.
and a constant function has zero derivative everywhere. So theorem is proved if this condition holds. अब लेते हैं if f is not constant. Now if f is not constant, then f has either local maxima or local minima in the interior. And the derivative at the local maxima or local minima must be 0. So f dash c equals to 0. ठीक है. Now ज्योमेट्रिकली समझ लेते हैं रोडीज थ्योरम एक्चुअली में कहना क्या चाहती है. ठीक है. सो एक कोई पॉइंट है a एंड एक कोई पॉइंट है b और इन दोनों पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम है. तो ये क्या हो गया, a f a b f b. ठीक है. तो अब देखिए ग्राफ किस टाइप से बन सकता है इनका. हमें ये भी गिवन है कि जो f है वो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में एंड ओपन इंटरवल ए बी पर वो डिफरेंशिएबल है. सो या तो इस टाइप से बनेगा, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है, प्लस ऐसे भी बन सकता है एंड बहुत सारे तरीके हमारे पास हो सकते हैं हम जिससे ये बना दे. इस टाइप से भी हो सकता है. ठीक है. सो अगर हम सिंपल ये वाला केस लें, ठीक है, हम सिर्फ ये वाला केस लेते हैं. सो इसका मतलब है कि एक किसी पॉइंट पर एक सी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. दैट मीन्स जहां या तो मिनिमम पॉइंट होगा या मैक्सिमम पॉइंट होगा. हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं नीचे. ठीक है. तो अगर यहाँ बनाएंगे तो सो एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 एंड सी पर मिनिमम वैल्यू आ रही है एफ की एंड यहाँ पर एफ की अगर हम ऐसे बनाते हैं ग्राफ देन मैक्सिमम वैल्यू आएगी एंड एफ डैश सी इक्वल्स टू 0. समझ आ गया. तो ज्योमेट्रिकली ये मीनिंग है रोलीज थ्योरम का. अब नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लीजिए. लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम. ठीक है. So let f be a function defined on closed interval ab such that f is continuous on closed interval ab second, f is differentiable on open interval ab then there exists c belongs to open interval ab such that fb minus fa upon p minus a is equals to f dash c. ठीक है. इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है.
आप खुद से ट्राई करना, मैं हिंट दे देती हूँ। हमें क्या करना है, एक फंक्शन मान लेना है gx विच इज इक्वल्स टू fx माइनस fp माइनस fa अपॉन p माइनस a x माइनस a। Observe that GA equals to GB। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कीजिएगा x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, देन g इक्वल टू GB आ जाएगा। देन अब इसमें हम रोलीज थ्योरम लगा सकते हैं। रोलीज थ्योरम लगाने के बाद हमें क्या हो जाएगा, g डैश x इक्वल टू 0 एंड व्हेन g डैश x इक्वल्स टू 0 देन इस इक्वेशन से g डैश x निकाल लीजिए एंड देन उसको x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, सो थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। अब मैं इसका ज्योमेट्रिकली थोड़ा बता देती हूँ कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एक्चुअली में कहते क्या है। ठीक है, कोई एक पॉइंट है A एंड एक पॉइंट है B। ठीक है, जो फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर वो कॉन्टिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है एट ओपन इंटरवल ए बी पर। तो किस टाइप का फंक्शन होगा, ऐसे कुछ करके होगा या फिर ऐसे होगा, तो अभी ऐसे ले लेते हैं कि इस टाइप का कोई फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए जो ये कोड है इसका, ये इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये पॉइंट है ए एफ ए एंड ये पॉइंट है बी एफ बी। ठीक है, तो इस लाइन का, इसको हम कह देते हैं कैपिटल ए एंड इसको बी, इस पॉइंट को कैपिटल बी। तो ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, यही होगा। तो यहाँ एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है सी, जिसका टेंजेंट, जिस पर अगर हम टेंजेंट बनाए वो पैरेलल होगा ए बी से। ठीक है, और यही ये थ्योरम कहना चाह रही है। सो अगर ग्राफ हम इस तरीके से बनाएंगे तो ऐसे हमें दो पॉइंट मिल जाएंगे जो कोड ए बी के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, कोची मीन वैल्यू थ्योरम। So let f and g be two functions defined on closed interval a to b such that first है f and g are continuous in closed interval a b। Second, f and g are derivable in open interval a b। ये हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएबल on open interval a b। Third, g dash x is not equal to 0 for each x belongs to open interval ab and ga not equals to gb। ठीक है, then there exists at least one point c belongs to ab such that fp minus fa upon gp minus ga is equals to f dash c upon g dash c। ठीक है, प्रूफ करते हैं इसको। इसका प्रूफ भी बड़ा सिंपल सा है।
सो सबसे पहले हमें ये गिवन है कि जो डिनोमिनेटर था जो हमें प्रूव करना था वो नॉट इक्वल टू 0 था, दैट मीन्स जी बी नॉट इक्वल्स टू जी ए. नाउ लेट fx be a function defined as fx plus lambda of gx. एंड लैम्डा को इस तरीके से चूज करेंगे कि जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी. तो लिख लेते हैं यहाँ पर एंड चूज लैम्डा इन सच अ वे to satisfy the condition fa equals to fb. So अगर ये इस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा देन fa plus lambda ga is equals to fb plus lambda gb. Now lambda ga minus lambda of gb equals to f of b minus f of a. देन सिंप्लीफाई करके लैम्डा किसके इक्वल आ गया, f of b minus f of a अपॉन g of a minus g of b equals to f of b minus f of a. यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे देन g of b minus g of a. देन जो फंक्शन हमने डिफाइन किया fx वो किस टाइप का हो जाएगा, fx प्लस माइनस f of p minus f of a डिवाइडेड बाय g of p minus g of a gx. ठीक है, अब देखिए जो फंक्शन fx है is continuous on closed interval AB and also differentiable on open interval AB. ठीक है, and FA equals to FB. Then by Rolle's theorem there exists C belongs to open interval AB such that f dash C equals to 0. ठीक है, so f dash C क्या हो जाएगा, f dash C equals to f dash x minus लैम्डा को ऐसे लिख देते हैं g dash x, g f dash c and g dash c सॉरी. ठीक है, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0. ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि f dash c इक्वल्स टू लैम्डा g dash c और लैम्डा इक्वल्स टू f dash c डिवाइडेड बाय g dash c. एंड अब लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं. उससे पहले देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस होगा, प्लस लैम्डा जी डैश सी. ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा फंक्शन. अब लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं. सो क्या बनेगा, एफ पी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इक्वल्स टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी. तो यही हमें प्रूव करना था. So hence Cauchy's mean value theorem is proved. एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम. Show that the maximum value of 1 upon x raised to the power x is e raised to the power 1 upon e. ठीक है, सो हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे. इसमें हमें क्या गिवन है, y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर x. दोनों साइड हम लोग ले लेते हैं
taking log both sides, we get अब देखिए हमने एक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log x रेज़ टू द पावर a इक्वल्स टू a log x, ठीक है। तो इसको यूज करके हमें क्या मिलेगा, log y इक्वल्स टू x log 1/x, ठीक है। एंड ये इक्वल हो जाएगा x log 1 माइनस log x by using the property log a upon b equals to log a minus log b, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, माइनस x log x, तो log y क्या आ गया, माइनस x log x। नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get equals to minus 1 plus log x, ठीक है। डिफरेंशिएट करके हमें विद रिस्पेक्ट टू x ये मिलेगा, ठीक है। This implies that dy by dx equals to minus y 1 plus log x, एंड अब हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस log x माइनस वाई 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस log x माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। एंड डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल था, माइनस वाई 1 प्लस log x, माइनस एंड y किसके इक्वल था, x रेज टू द पावर माइनस x, ये किसके इक्वल आ गया, y 1 प्लस log x होल स्क्वायर, y को रिप्लेस कर देते हैं x रेज टू द पावर माइनस x माइनस x रेज टू द पावर माइनस x, ठीक है। यहाँ पर अपॉन में x भी आएगा, ठीक है। अब देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, x रेज टू द पावर माइनस x 1 प्लस log x होल स्क्वायर माइनस x रेज टू द पावर माइनस x माइनस 1, ठीक है। नाउ फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू dy by dx must be 0. This implies that minus y 1 plus log x equals to 0. That means 1 plus log x equals to 0. This implies that log x, one second, this implies that log x equals to minus 1, implies that x equals to e raised to the power minus 1
ठीक है। नाउ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 1 अपॉन ई क्या आ जाएगा? e रेज टू द पावर माइनस ई 1 प्लस log 1 अपॉन ई होल स्क्वायर माइनस e रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन ई माइनस 1। यहाँ पर भी e रेज टू द पावर 1 अपॉन ई आएगा। ठीक है, अब देखिए किसके इक्वल हो जाएगा? e रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन ई 1 प्लस log 1 माइनस log e होल स्क्वायर माइनस e रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन ई माइनस 1 इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन ई। log 1 की वैल्यू 0 होती है एंड log e की वैल्यू 1 होती है, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। माइनस e माइनस 1 अपॉन ई माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस e रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन ई माइनस 1 and this is smaller than 0. So x equals to 1 upon e is the point of maxima and the maximum value is x की जगह फंक्शन में 1 अपॉन e पुट कर देंगे, देन 1 अपॉन 1 अपॉन e रेज टू द पावर 1 अपॉन e, तो क्या हो गया? e रेज टू द पावर 1 अपॉन e। ठीक है, अब लिखिए इनडिटरमिनेट फॉर्म। सबसे पहले देखिए f और g कोई दो फंक्शन है सच दैट लिमिट x टेंड्स टू a of fx and limit x tends to a of gx both exist and limit x tends to a gx is not equals to 0। ठीक है, then limit x tends to a fx upon gx equals to limit x tends to a fx upon limit x tends to a gx. But what happens when limit x tends to a gx equals to 0? ठीक है, so suppose limit x tends to a gx equals to 0 and limit x tends to a fx upon gx exists and equals to L। ठीक है, suppose ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड ये इक्वल है L की, then limit x tends to a fx upon gx equals to limit x tends to a fx upon gx multiply limit x tends to a gx equals to L dot 0 equals to 0, बिकॉज यहाँ हम लिमिट x टेंड्स टू a gx क्या लेके चले हैं 0। एंड देखिए ये किसके इक्वल होगी? लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन ये जो gx है और ये gx है, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो किसके इक्वल हो जाएगी? लिमिट x टेंड्स टू a fx एंड ये इक्वल आएगी 0। अभी यहाँ पे ये 0 आया। ठीक है, सो ये कहा जा सकता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a gx 0 है एंड लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx एग्जिस्ट कर रही है एंड वो फाइनाइट है, देन लिमिट x टेंड्स टू a fx शुड बी 0। ठीक है,
तो अब एक डेफिनेशन लिखिए, लेट f dash x and g dash x exists for every x except possibly at x equals to a. If g dash x is not equal to 0 for any x in open interval a minus delta a plus delta except possibly at x equal to a, if limit x tends to a fx equals to 0 equals to limit x tends to a gx and limit x tends to a f dash x g dash x equals to L, then limit of x tends to a fx upon gx equals to L. This is known as L'Hospital rule. So the forms in which we can apply L'Hospital rules are 0 by 0. इसमें तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे. Infinitive upon infinitive, 0 cross infinitive, infinitive minus infinitive, 0 raised to the power 0, 1 raised to the power infinitive, and infinitive raised to the power 0. इन फॉर्म्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं 0 by 0 की फॉर्म में एंड देन L'Hospital रूल अप्लाई कर सकते हैं. ओके, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जो ये फॉर्म्स है 0 की पावर 0, 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटिव एंड इंफिनिटिव रेज़ टू द पावर 0, इन फॉर्म्स को हम 0 by 0 की फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे एंड देन हाउ वी विल अप्लाई L'Hospital रूल. तो एग्जांपल ले लेते हैं. लिमिट x tends to 0 positive cot x raised to the power sin x. इसको हमें प्रूव करना है, ये इक्वल टू 1 है. सॉल्यूशन, अगर हम इसमें 0 पुट कर दे देन क्या बनेगा, cot x इक्वल्स टू क्या होता है cos x अपॉन sin x एंड cos 0 इक्वल्स टू 1. cos 0 अपॉन sin 0 equals to infinitive and sin 0 equals to 0. तो ये फॉर्म बन गई infinitive की पावर 0. ये इस टाइप की फॉर्म बन गई. तो इसमें हम क्या करेंगे, log ले लेते हैं बोथ साइड. y equals to मान लेते हैं हम cot x raised to the power sin x and log दोनों साइड ले लेते हैं. then log cot x raised to the power sin x equals to sin x log cot x. देन अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं देन ये किस टाइप की फॉर्म बन जाएगी, देखिए sin x को लिख लेते हैं 1 अपॉन cosec x log cot x. ठीक है, देन लिमिट अप्लाई करेंगे, अगर 0 रख देंगे तो किस टाइप की फॉर्म बनेगी. cot 0 क्या होता है, infinitive एंड log infinitive infinitive एंड cosec 0 क्या होगा, cosec x होता है 1 अपॉन sin x एंड sin 0 इक्वल्स टू 0. सो ये भी infinitive, तो infinitive बाय infinitive की फॉर्म बन जा रही है. ठीक है, तो अब इसमें L'Hospital रूल अप्लाई कर देंगे. माइनस cosec स्क्वायर x 1 अपॉन cot x
डिवाइडेड बाय माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स। डिफरेंशिएट कर देंगे न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ कोसेक एक्स से एक कोसेक एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस, फिर क्या बचेगा कोसेक एक्स डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू लिमिट x tends to 0 positive 1 upon sin x cos square x upon sin square x। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बचेगा, नहीं सॉरी sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स बचेगा, sin x अपॉन cos स्क्वायर। अब लिमिट लगा देते हैं, क्या आएगी साइन 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा एंड cos 0 क्या होता है 1। अब ये किसकी लिमिट आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव log y equals to 0। This implies that limit x tends to 0 positive y equals to e की पावर 0 equals to 1। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। हमारी डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे रीमन इंटीग्रल।